नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ। हर बार मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ ना कुछ आपको दूँ। आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जो भी चीज़ आपके साथ बातें करता हूँ उसका कुछ ना कुछ तो असर आपकी बैंक के परिचालन में या हाउ टू मैनेज योर बैंक, you must be getting some or the other help on the basis of what I share with you. Today I'm going to share something which is in existence and we have discussed a lot for almost over a year, in the sense that I'm going to talk about the last year's 27th April 2021 circular, which talks about the guidelines for appointment of statutory auditors and how urban cooperative banks are impacted on that. You all know that until last year, how you were using the appointment of statutory auditors, wherein you used to take the name of a statutory auditor in a board, a firm, and then take it to the AGM. Normally, the AGM does not question as to which firm you are going to appoint. But post PMC, things have changed. And post BR Act amendment, things have radically changed. Last year was a half-baked year in the sense that Reserve Bank of India issued these guidelines in April 21, but then they allowed that you should look to these guidelines in the second half of the year. And wherein by the time the AGM of various banks was concluded, and there was confusion as to how to conduct an AGM, whether online or physical method. And various agencies had granted some extension. But then we had learned basically how the appointment is required to be made. Despite that, there remained a certain area of concern and certain area of governance issues amongst the cooperative banks. As to how a firm has to be selected and how a firm has to be appointed, continued to have some confusion in various discussion forums, and therefore I thought that I should bring alive what are the provisions which are contained in the 27th April 2021 guidelines and how to implement them. Remember, these guidelines are fairly simple and easy to understand, but then there exists some gap here and there to interpret it differently. I would request you to read those guidelines very properly for the simple reason 2022-2023 is going to be the year where the implementation of your actions on the appointment of statutory auditors would be clinically decided by the Reserve Bank of India. And the first and the foremost thing that you must remember is that if at all you want to appoint a statutory auditor for the year between the 1st of April 22 to 31st of March 2023, you have to ensure that you select a firm which is fitting into the eligibility norms now and submit an application before 31st of July. Why the date has been given 31st of July? For the simple reason, 30th June is the deadline for publication of your annual accounts. Whether you conduct AGM or otherwise, your AGM has lost its preference or significance over the appointment of statutory auditors, and that is where the key of selecting a proper firm where your proposal is not rejected by the Reserve Bank of India. Let us understand what are the contents of this particular circular and how do they affect the urban cooperative banks. This particular circular is applicable to almost all the entities excluding RRBs. They are applicable to NBFCs. These guidelines are applicable to commercial banks, the urban cooperative banks, and name them. With these guidelines, I believe that we'll move forward in understanding these guidelines. I'm going to refer to the circular dated 27th of April 2021 and would like to draw your attention to a couple of points which are very critical and important. One of the simple conditions which all of you know is that you must have a prior approval of Reserve Bank of India before you take the firm's name in your the AGM for approval. So इसका मतलब ये है कि अगर जब तक आपको RBI आपने जो रेकमेंड किया हुआ फर्म है उसको जब तक अप्रूवल नहीं देती तब तक ये नाम आप AGM में स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अप्रूवल के लिए ले नहीं सकते हो. इसका दूसरा मतलब ये है कि यू हैव टू मूव इन टाइम.
Normally what we do is that somewhere in the month of August and September we organize our AGMs, and then in that AGM we take the subject of appointment of statutory auditors. So there is a sufficient time gap that is given by Reserve Bank of India, before which you should apply to Reserve Bank of India for getting approval of the statutory auditors appointment every year, each year. Another thing which is very important is for us to notice that those who are big, in the sense that if your bank is having asset size beyond 15,000 crores, you need to appoint 2 statutory auditors. For all others, most of the firms, barring some 20 odd banks in the country, rest are all having asset size less than 15,000 crores. And if your asset base is less than 15,000 crore, one single statutory firm's appointment is good enough for you, and you need not worry more about that. Your audit committee of the board, and the board has got a very critical role to play. Since the composite guidelines are there, if your asset base is up to 50,000 crores, probably you are a commercial bank, and then you need a minimum 4 statutory auditors is the indication. And then the least expectation that they have given, which is applicable to commercial as well as urban cooperative bank, is that they should cover top 20 branches or top 20% of the branches of your bank in terms of coverage of the audit that they are saying. One of the concepts that they have brought in this circular is the independence of auditors. Now, if at all there is intervention from the executives that be in respect of the audit function of the bank, the auditors as well as the board, I mean the first line of defense will be the board of directors and the audit committee of the board, where the auditor can approach कि भाई ये हमें तकलीफ हो रही है, आपके लोग हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं वगैरह वगैरह. लेकिन आपका बोर्ड भी अगर इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देता है, या जो अनहोनी हो रही है उसको रोकता नहीं है, तो ऑडिटर्स के पास ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ऐसा है कि वो आपका जो सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर है उसको लिख सकते हैं, यानी कि आरबीआई को डायरेक्टली, जो रीजनल ऑफिस होगा आरबीआई का, उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि द बैंक इज़ नॉट कोऑपरेटिंग. दिस इज़ अ न्यू थिंग दैट हैज़ कम इन, एंड इन फैक्ट इफ आई लुक एट द सर्कुलर, देयर वाज नो सच सर्कुलर अर्लियर for the urban cooperative banks. It was very recently, that is last year, the guidelines have been issued in terms of appointment of the auditors, and they have qualified that who can be the statutory auditor of the firm. Eligibility norms have been described under the BR Act. Section 30 defines who can be your auditor. Anybody who carries a qualification prescribed under BR Act to conduct an audit can be an auditor. So normally it's a chartered accountant. The situation is likely to change over a period of time, because recently what we have seen is that the government of India has modified the ICI Act, and they have tried to curtail the dominance of ICI by mooting the idea of starting an Indian Institute of Accountancy on the lines of IITs and IIMs. Of course, that will take another 3 or 4 years of time, and probably things would change in the next 3 or 4 years, where even your statutory auditor could be conducted by a person who has graduated from that IIA, Indian Institute of Accountancy. Of course, the time is there for all of us to see how things evolve. One of the major conditions that they have prescribed in terms of appointment of the statutory auditors, as far as urban cooperative banks are concerned, you cannot appoint a concurrent auditor as your statutory auditor. That is one of the conditions contained in paragraph number 6.3. And then one of the interesting paragraph which they have stated is this, that the time gap between any non-audit work services mentioned at section 144 of Indian Companies Act, or rather Companies Act 2013, internal assignments, special assignments, comma, etc. This is wide scope for interpretation by a statutory auditor for the entities, or any non-audit related work for the group entities. The time gap between such a firm and the firm, if at all warrants the appointment of statutory auditor, the time gap prescribed has been 1 year. Now, if that 1 year has to be construed, any firm which is having any assignment with you,
1 year cooling period, clear 1 year cooling period prior to the date of appointment has to be observed by the entity. And then secondly, और एक उसमें प्रोविज़न दिया गया है कि जो काम चल रहा है, अगर वो फर्म स्टैट्यूटरी ऑडिट के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है तो नॉन डिसरप्शन के हिसाब से वो अपना काम जारी रख सकते हैं और बोर्ड को डिसीजन लेना है कि ये किस तरह से इनको करना है। ऑडिटिंग फर्म्स को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो टॉप ऑफ द नॉच रखने हैं। और अगर ऑडिट फर्म आपको लगता है, आपके बोर्ड को लगता है कि भाई ऑडिट फर्म ढंग से काम नहीं कर रही है, तो यू कैन डेफिनेटली रिपोर्ट द मैटर टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, of course with the consent of the board or the audit committee of the board. And the statutory auditor's appointment has been specifically mentioned that it can be made for a period of 3 years. Once you appoint an auditor for 3 years और 1 साल के बाद आपको लगता है कि ये ऑडिटर ढंग से काम नहीं कर रहा है, you want to remove it. The disqualification period that has been prescribed once a firm does a statutory audit function with your bank, there has to be a cooling period of 6 years. So 3 साल के बाद 6 साल वो फर्म आपके यहाँ कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट और उसके जैसा कोई काम नहीं कर सकते. इट्स अ स्ट्रेट कूलिंग पीरियड दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड. और अगर कोई फर्म आप 3 साल अपॉइंट करने के बजाय 1 साल के बाद ही उसको रोक देते हो, तो 6 साल का पीरियड जिस साल से या जिस पीरियड से आप रोकते हो वहाँ से वो कंप्यूट होना चालू हो जाता है. वो ये कहते हैं कि एन ऑडिट फर्म वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट in the same entity for a period of 6 years after a full or a part one term of the audit tenure that has been prescribed. And of course the audit firm can continue to undertake the statutory audit for other entities or other firms. और उनका और एक ये कहना है कि कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म 8 से ज़्यादा किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम नहीं ले सकती है. अगर कमर्शियल बैंक हो तो वो टेन्योर उन्होंने 4 साल का रखा है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए वो 8 साल का रखा है. मैंने देखा है कि कई ऑडिट फर्म्स ऐसा कर रही हैं कि भाई हमें तो कूलिंग पीरियड लग गया, अब फलाने फर्म को दे दो और नाम उस फर्म का रहेगा लेकिन काम हम करेंगे. दिस हैज़ बिन कैटेगरिकली प्रोहिबिटेड. कहाँ पे प्रोहिबिट किया है? पान नंबर 6 पे उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है, वो ऐसा है कि शेयर्ड सबकॉन्ट्रैक्टेड ऑडिट बाय एनी अदर एसोसिएट ऑडिट फर्म अंडर द सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म्स इज़ नॉट परमिसिबल. तो ये आपको ध्यान देना है और आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये सही तरीके से हो. और बोर्ड को, रिज़र्व बैंक को रिकमेंड करना है कि वो किस तरह से अपॉइंटमेंट करें. फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उन्होंने दी है जिसमें ये कहा गया है कि 1000 करोड़ के अंदर अगर आपका बिजनेस हो तो फर्म में सीसा या डीसा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीसा या आईएसए होने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन 1000 करोड़ के ऊपर अगर आपका एसेट बेस है तो आपके जो एलिजिबल फर्म है उसमें कम से कम 1 सीसा होना ज़रूरी है. और एक्सपीरियंस जो है, ऑडिट का एक्सपीरियंस है, वो 6 साल का होना चाहिए और प्रोफेशनल स्टाफ 8 नंबर होने चाहिए अगर आपका एसेट साइज 1000 करोड़ के ऊपर है. सो दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल एरियाज दैट यू नीड टू इवैल्यूएट व्हाइल रिकमेंडिंग द सेम टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और दूसरा ये उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई ऑडिट फर्म आप अपॉइंट करते हो और आपका एसेट साइज 1000 करोड़ के ऊपर है तो कम से कम 2 पार्टनर ऐसे होने चाहिए कि जिसका फर्म के साथ एसोसिएशन 10 साल का हो. अभी एक्सक्लूसिव एसोसिएशन ये टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज़ की है. इसका मतलब ये है कि ये जो 2 पार्टनर हैं वो 10 साल फर्म में रहेंगे, फर्म में होना चाहिए. दे शुड बी इन ए फर्म फॉर 10 years. दे शुड नॉट बी वर्किंग एल्सवेयर. So they should have exclusive association with the firm. So exclusive association is a term that they have brought into the guidelines. And ये जो exclusive association का जो subject है वो ऐसा है
कि ये बंदा उस फर्म में जो फर्म आप अपॉइंट करने वाले हो उसके अलावा इंडिपेंडेंटली कोई दूसरी प्रैक्टिस न करता हो। दिस सर्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड। और ऑडिट एक्सपीरियंस के बारे में भी उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है और ये कहा है कि अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग में ऑडिट करने का अगर एक्सपीरियंस है तो वो फर्म एलिजिबल हो सकती है। दूसरी एक नई चीज़ उन्होंने बताई है, वो ये है कि ये जो ऑडिट फर्म होगी, ये फर्म या उसके पार्टनर जो हैं वो किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी के यहाँ पे बैन नहीं होने चाहिए। उनका ये कहना है कि द ऑडिट फर्म शुड नॉट बी अंडर डिबारमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंटल एजेंसी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एंड द ICAI और अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स लाइक सेबी। तो ये वो RBI नॉर्मली क्या करता है, आपका जब अपॉइंटमेंट क्लियर करता है तो वो ये कहते हैं कि भाई आप इन 2 इंस्टीट्यूट से क्लियरेंस ले लो। जो फर्म आपने रिक्वेस्ट की थी कि इन्हें अपॉइंट करो करके, और जब आप प्रस्ताव भेजते हो तो आपको 2 फर्म्स के नाम देने पड़ते हैं। 2 में से एक ने अगर अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो दूसरा ऑप्शन आपको खुल जाता है, दूसरे फर्म का ऑप्शन आपको खुल जाता है। सो यू हैव टू रिकमेंड 2 फर्म्स नेम टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ statutory auditor, where the preference will be given to the first firm, and if the first firm refuses to accept the appointment letter, then the second firm can be considered by Reserve Bank of India. और एक चीज़ रिजर्व बैंक ने इस सर्कुलर में कही है, वो ये है कि ये जो फर्म होगी, इस फर्म को एक एडिशनल कैपेबिलिटी होने की उन्होंने रिकमेंडेशन किया है। वन एडिशनल कैपेसिटी और capability they are saying that this firm should have experience in deploying computer assisted audit tools and techniques, CAT tools and generalized audit software। आपके पास अगर ऑडिट का सॉफ्टवेयर हो तो उसमें काम करने का इनको एक्सपीरियंस या कैपेबिलिटी होना अनिवार्य उन्होंने कह दिया है। और लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना अनिवार्य, ये उन्होंने कह दिया है। कंटिन्यूड कंप्लायंस, वो ये कहते हैं कि आप उनको एलिजिबल कर सकते हो, लेकिन उनका कंप्लायंस अच्छे तरीके से कर सकता है। और फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर है वो डिस्क्राइब की है कि आपको 3 साल आप अपॉइंट कर सकते हो, उनका डिक्लेरेशन लेना है, सर्टिफिकेशन लेना है और प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेना बहुत ज़रूरी है। ये सर्कुलर मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन किया एक बार फिर से क्योंकि 31 जुलाई आ रही है एंड यू हैव टू बी इन टाइम एज फार एज द सिलेक्शन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म इज कंसर्न। डू नॉट सिलेक्ट अ फर्म विच इज़ ऑलरेडी एसोसिएटेड विद यू। सिंपल फंडा, द फर्म विच इज़ नॉट एसोसिएटेड फिटिंग इन टू द कैटेगरीज विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, नॉट कनेक्टेड फर्म इन एनी वे। आपके पास कोई अगर टैक्स ऑडिट वाला फर्म होगा या GST वाला फर्म होगा या और कोई असिस्टेंस करने वाला फर्म होगा, कंसल्टेंट फर्म होगा CA का जो एलिजिबल होता है, उनमें से किसी को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। ऐसी फर्म चुनो जिसका आपके साथ कोई वास्ता नहीं हो दूर से भी। अगर आपने किसी ऑडिट फर्म को कहीं ना कहीं किसी तरह से कुछ पेमेंट किया है या कुछ एडवाइस लिए गए हैं और आपके बुक्स में उनके पेमेंट के एडवाइसेस दिख रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको यू हैव टू कम आउट क्लीन। यू हैव टू सेंड द नेम ऑफ द फर्म विच इज़ एब्सोल्युटली क्लियर एंड इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ यू। You will have a least possible trouble. I believe that July is coming up. You start evaluating the audit firms which are either way not associated with you and select a firm which will not be rejected by Reserve Bank of India. This function you need to do since your balance sheet and other audit functions are concluding. You should be focusing on the selection of the statutory auditor for the next year. This will enable you to ensure that you remain in good books of Reserve Bank of India. You do not have any bias towards the selection of auditors, क्योंकि ऑडिटर्स की ज़िंदगी आगे जाके ख़राब होने वाली है, क्योंकि उन्हें एक डिक्लेरेशन ये भी देना पड़ सकता है कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो उन्होंने कम्प्लीटली फॉलो किए हैं, जो भी डायरेक्शन से रिजर्व बैंक के वो भी उन्होंने कम्प्लीटली फॉलो किए हैं, और इस तरह का डिक्लेरेशन उन्हें देना पड़ेगा। वो अगर इस तरह का डिक्लेरेशन देते हैं तो दे हैव टू इंश्योर दैट दे आर एब्सोल्युटली compliant with the Reserve Bank of India guidelines while conducting the audit of your bank.
Now maintain this quality, be transparent, be compliant, be a happy bank. Thank you for watching. Thank you so much for watching. If you like my videos, do subscribe and do share the videos. Spread this knowledge, spread the ideas with everybody who is in the sector, because I do it for you. Thank you so much.